Assalamu alaikum. With hope and prayer for your well-being, we are going to start the program today. Today, we are going to talk about startups and what it takes for the startups to start the business. We are talking about an economy which is Pakistan, and Pakistan is in 2020 what Indonesia was in 2009. We live in an economy which is known as fastest growing economy in Asia. This title, which is earned by not anyone else other than McKinsey and Company. Another report, which was issued from Germany's Deutsche Welle report, it says that Pakistan is going to be the next big technology startup in world. Let us talk to Shafaat Rasool Hashmi sir upon basic needs for a startup to bootstrap itself in Pakistan. Shafaat is the founder and CEO of Brandbeat Advertising and Company. He is also CEO and founder of Teckross and is looking after the affairs as chairman of Stalliongates Asset Management and Advisory. Join us to talk and share the wisdom of Shafaat with us today. Before lagging between you and Shafaat Bhai, I would request Shafaat Bhai to introduce himself to my audience. Assalamu alaikum, Shafaat Bhai. Walaikum assalam, Shahzad. Very kind of you to bring us on board on your amazing show. You're very well prepared, and I'm really looking forward to having a real deep discussion for all your audiences. And by way of introduction, yes, you're right. I'm the CEO and founder of Brandbeat Advertising and Communications. Headquartered from Dubai, we have 8 global offices, and we have served more than 750 plus brands, SMEs, and corporations globally. I'm also chairman for Stalliongates Asset Management, which means that we are into private equity space, venture capital, fundraising, and financial advisory. Furthermore, I've also started my little venture with the name of Teckross, looking after technology, still a baby, and trying to pamper it and see what it turns out to be. But thank you for having me on board. Thank you very much, Shafaat. Shafaat, when you talk about the technology, any startup which is in its infancy program and it's in pamper days, how would you define those pamper days of the business setup when we talk about the startups overall? I mean, if I am to rephrase the question, how do you define startup in first instance? Number one. Number two, what is the scope of startups in Pakistan in general and in these testing times in particular? Excellent question. I think let me first try to figure out who starts a startup. Okay. And so there are 4 categories. One is an entrepreneur, which is a very commonly used terminology. One is self-employed, one is a business owner, and one is a professional. Now, all these 4 are essentially different. So I might take a little bit of time, but I want to clarify this. So let's say you're a graphic designer who is working in some advertising agency, and suddenly you realize that I can get more business from Fiverr or Upwork or Elance, okay? And you leave that job and you continue getting stuff which is from online business. What you have essentially done is you have become self-employed. You're not an entrepreneur. Similarly, if you have a little business and people are already, let's say, in the textile business, or there are people who are selling jewelry or designing jewelry or fashion, and you also try to get into the same space with the same sector, what you have essentially done is that you have become a business owner and not an entrepreneur. Thirdly, let's say you're a doctor and you're a surgeon and you go to multiple hospitals to do surgery or give consulting, and then finally you realize that, okay, let me put up my own clinic and I will just do my private practice as my own clinic. So goes with the lawyer. These people are essentially professionals, okay? So what they are also done is that they're professionals, but they are not entrepreneurs. Now, who is an entrepreneur? Entrepreneur is someone who comes up into an existing industry or maybe a new sector, but does his business or creates an offering which is distinct, innovative, has a very clear competitive edge, is highly value driven, and certainly solves a very relevant common problem in a way that it can be made scalable, it can be monetized, and furthermore, it can have an impact in how we do things. Okay. And if you come up with something of this sort, this is where entrepreneurial journey essentially starts.
Now you talk about startups. The startups can be anything. It is not essentially that you start with something which is an application or an e-commerce website, or it has anything to do with technology. It could be a technology startup like edtech, fintech, 123tech, or agritech, but it could be non-technology as well. It could be non-tech. It could be just a product which, innovative product which solves something more efficiently. It could be a little business model, a franchise model, something in education that you can do, something in any services that you can do. So entrepreneurship or a startup is essentially anything that you start anew and has not, and its business processes are to be defined in a new way, which has not been done earlier very much. Thank you very much for explaining the difference between all these three. You have started from self-employment, then business ownership, and then professionalism, and then you landed yourself into the actual definition of startups. When we talk about actual definition of startups, let me go through, take you to a figure here. According to Shafaat Bhai, according to a survey, it is $3 trillion industry we are talking about today. And that is that much important that I must repeat it. We are talking about $3 trillion industry today. Now, if that is that much important, we must realize the importance of what you have said, that it is mandatory for a startup to go back and see that what is the uniqueness to the product and service which the startup is going to offer. My question here lands here in a way that you are going to tell us, after establishing the importance of this is minimal viable product, in your viewpoint, new startups usually lack this trait due to urgency in formal launch and excitement. They lack to go back and touch the potential customers in the first instance. What would you suggest if someone wants to skip or squeeze this step of formal launch before going into the formal launch of the startup? Okay, interesting question. A $3 trillion economy, which is in the startup space, it includes almost everything and includes a lot of valuations. So different businesses are valued at different, valuations. Essentially, how much revenue they are generating, how much employment they are generating, that really turns out to be a question, because we come across a lot of overvalued startups as well. Now, having said that, at the same time, yes, it's a great economy. It's a new thing, and but 450 million entrepreneurs or business owners are out there in the world, total global, in a population of 7 billion. Similarly, approximately 400 million people are also unemployed. So if you look at the whole scenario, the top 450 million people who are business owners essentially employ or feed the balanced population of 7 billion. And this justifies that why is it that the top 5% actually owns the entire, wealth in the world? Okay, because they're essentially business owners. Now, business owners, as they might enter into an economy which is a startups ecosystem, you can't really skip or squeeze the step of a formal launch. People do go for a soft launch as an initial stage, but you need to launch it proper. Your launch is your first stepping stone into the real market. This is where you receive all kind of feedback from investors, stakeholders, consumers, channel partners, distributors, and other industry peers as well. And with a formal launch, it's not only about launching, and it's not only just your GTM plan, because if you don't have a clear, distinct, and a winning competitive GTM, go to market plan with you, basically you're just going to hustle through the time and waste your time. So be it at an MVP stage, you can go for a soft launch, test the market, and do market research. The key over here is doing a market research pre MVP, a market research at MVP, and then another market research pre-launch and a market research post-launch. So you need Yeah. four marketing research to get insights of what your customers is actually looking at. Because be it any project, any business, your customer feedback has to be a regular stream of information coming in for you to improve
and for you to remain competitive, and for you to not only satisfy but delight and excite your customers. And that would help you retain the user base as well. That would help you help the users to sustain and stay on your app or your business as well. So I strongly recommend that your first step needs to have a solid foundation and needs to be carefully planned, carefully articulated, very properly positioned, and your branding, marketing, positioning, what you are even going to say at your launch ceremony, every little thing adds up to create the whole scenery. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं पाकिस्तान में, और वो चाहेंगे कि आप उर्दू में भी उनसे थोड़ी सी बात कर लें। जैसे आप बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्टार्टअप। प्री लॉन्च भी करने हैं, सॉफ्ट लॉन्च के बाद भी करना है, फॉर्मल लॉन्च के बाद भी करना है, इवन सो मच सो कि आपकी पहली जो फॉर्मल लॉन्च के बाद कम्युनिकेशन होनी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, समथिंग, एनी कम्युनिकेशन यू आर गोइंग टू गो आउट, you must know कि what words you are going to use. मुझे ये बताइए शफात कि I was into a study which shares that reasons of startups क्या होते हैं failure के। तो when I was into this thing, I came to know that out of 10 the biggest reason is the one you are talking about। ये एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है फेलियर का कि एक स्टार्टअप अपनी चीजों को देखते हुए वो चीज बना लेता है जिसमें वो खुद से वेल वर्स है, जबकि वो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। लेकिन हेयर एट द सेम टाइम दूसरा जो बड़ा डिनोमिनेटर है, आई मीन लैक ऑफ फोकस एंड पुअर सेल्स इन मार्केटिंग। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू से समथिंग अबाउट दिस कि पुअर मार्केटिंग एंड सेल्स उस स्टार्टअप की, और दूसरा ये कि आपके पास जो एग्रेशन स्टार्ट में होता है, यू लूज द रिदम ऑफ दिस एनर्जी एंड एक्साइटमेंट बाय द ईयर 1 or 2 क्लोजेस। हाउ टू मेक योरसेल्फ fully excited throughout the first 5 years of the startup? देखिए, it's not only the first 5 years. 5 years तक तो if you have moved on, actually your burn rate must have slowly, gradually increased. Because as soon as you increase the size of your spaceship, the more fuel it requires to move on, and it's like a snowball effect. Now, until and unless you're not having the right revenue income and revenue streams coming in, is going to be a hassle. So the first step is कि अक्सर लोग जो startups fail होते हैं, I completely agree with your graph, कि अक्सर तो जो प्रोडक्ट मार्केट फिट होती है वो अचीव नहीं हो पाता, और उसकी वजह से द प्रॉब्लम जिसको वो सॉल्व करना चाह रहे होते हैं वो completely मार्केट से irrelevant होता है. It's not something needed. Sometimes if the problem is relevant and people are looking for a solution, it is not scalable and it is not monetizable. So this means that this community has to evolve. One very important thing is क्योंकि बहुत सारे startups का जो आपको एक big number आता है ना, 56% failure rate और 95% failure rate, ये failure rate शहजाद इसलिए आता है because governments जो हैं उनका जो economic data है वो यूनिवर्सिटीज में, स्टूडेंट्स में और स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ प्रॉपर्ली शेयर नहीं हो रहा। अगर लोगों को पता हो कि किन इंडस्ट्रीज में किन जगहों पे गैप्स हैं या कौन सी जगह अंडर सर्व्ड हैं, और अगर कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, अब अगर एक एग्रीकल्चरल बैंक अपनी रिपोर्ट्स को शाया करे और बताए कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जब हम लेंडिंग करते हैं फार्मर्स को तो वी हैव द फॉलोइंग इश्यूज, और इस वजह से वो फेल आउट होते हैं या हमें उनके बाद में कोलैटरल लेना पड़ता है, तो आप एक इंडस्ट्री को समझ सकते हैं। एक स्टार्टअप के पास जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो वो उसको बेहतर तरीके से उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। ओके, बट द प्रॉब्लम इज वन के इंफॉर्मेशन इज नॉट readily available to startups. The second problem is every second guy who graduates and is unable to find a job becomes a startup, and therefore it adds into the number of the failed startups. Okay, so मैं हमेशा लोगों को suggest करता हूँ कि once you graduate, the ideal career path is to go for a job in an SME. So you learn multiple functions, you have job rotation, you learn कि एक आपका जो business owner है वो थोड़े से कैश के अंदर 8-10 लोगों को कैसे मैनेज कर रहा है, ओके, कैश मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, वो क्या ट्रिक कर रहा है कि अपना बिजनेस उसका 12 लोगों का चल रहा है। और फिर उसके बाद यू शुड गो इनटू अ कॉर्पोरेशन एंड लर्न हाउ द स्ट्रक्चर्स एंड द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वर्क्स, हाउ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ कंपनी वर्क्स,
what kind of branding, culture, values are implemented. That gives you a very professional approach towards life, and your horizon opens up. You get more exposure. You also get connected with the industry peers, supply chain, customers, and you understand how in reality bigger companies operate successfully. तो जब आप ये दो चीजें सीख लें, उसके बाद if you have research data from Chamber of Commerce's or different research institutions or World Bank research, तो अगर आपके पास different sectors की information आ जाए, then you should actually step in, finding out what can be done. And if so, another big problem is that most of the startup community or entrepreneurs, they don't even know how to conduct a market research. Okay, sometimes they have leading questions, sometimes they have double barrel questions, sometimes the instrument that they're using for conducting their research exceeds the cost, okay, and they can't really budget it, or the sample that they're using is not carefully curated. So these are all the problems here. Branding and sales, yes, ये भी एक two-way sword है. कुछ स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि शुरू में ही बहुत ज्यादा पैसा अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में खर्च कर देते हैं, जबकि उनका एमवीपी रेडी नहीं होता. Okay, so they would go to a big agency and put $3,000, $4,000 just for their branding, or up to $5,000, which I believe is very high for a startup to go ahead with. Maybe you need proper branding and stuff somewhere when your MVP is halfway. ठीक है. अच्छा, furthermore startup driven होते हैं कई दफ़ा, because आपकी इंस्पिरेशन होती है कि जी मैं फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब इन लोगों से इंस्पायर्ड हूँ. ठीक है, मार्क जकरबर्ग से इंस्पायर्ड हूँ तो काली टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया और अपने आप को मार्क समझना शुरू कर दिया. अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर सीईओ लिख के उसको फ्लॉन्ट करना शुरू कर दिया, जिसको मैं अक्सर फाउंडर्स ईगो भी कहता हूँ. तो ईगो जो है जब वो प्ले करने में आ जाती है तो आप कस्टमर्स को और मेंटर्स को सुनना बंद कर देते हैं, और आप ऑन द कॉन्ट्ररी अपनी ईगो को सुनना शुरू कर देते हैं, और आपकी पूरी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पोजिशनिंग, सेलिंग टैक्टिक्स सारे के सारे ईगो ड्रिवन होते हैं या पर्सनल प्रेफरेंसेस की बेस पे ड्रिवन होते हैं. दे शुड, ऑल ऑफ दिस शुड एक्चुअली बी कस्टमर ड्रिवन. ओके, एंड दिस इज वेयर पीपल, द थर्ड मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टार्टअप्स फेल, दैट इज पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो अगर एक एंटरप्रेन्योर ने या एक फाउंडर अगर वो अपनी पॉकेट मनी मैनेज करना नहीं जानता या अपनी सैलरी को मैनेज करना नहीं जानता, वो मेरे फंड्स को मैनेज नहीं कर सकता एज एन इन्वेस्टर. ठीक है, वो अपने कैश फ्लो को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता as an entrepreneur or as a chief C-level executive in his firm. So ये 3-4 वजूहात होती हैं. और आई थिंक एक मसला ये भी होता है कि sometimes people are reluctant to change and adopt to the changing customer behavior, consumer behavior or preferences. आपने एक आइडिया कंसीव किया, उसके ऊपर आप एडमेंट हो गए, पूरी दुनिया आपको कह रही है बेटा इसके ये 2 मॉड्यूल्स निकाल के ये 3 मॉड्यूल दूसरे ऐड कर दो. यू विल नॉट लिसन. आप कहेंगे नहीं जो मैंने सोचा मैंने वही करना है. So you have put things on your ear, not ready to listen to the market, not ready to listen to the experts, not ready to listen to your mentors, and you are so inflexible that you carry on doing and digging the grave yourself. So such people, वो जब 2 साल 3 साल गुजार लेते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट रेस करके एक प्रोजेक्ट को लॉन्च स्टेज पे ले जा रहे होते हैं और अभी तक उसका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होता, वो पड़े रहते हैं और 3 साल बाद दे आर अंडर डेट एंड दे हैव अ फेल्ड स्टार्टअप जस्ट बिकॉज़ दे हैव नॉट लिसन्ड. शफात, मुझे ये बताइए कि it is written in the documents and articles on the internet that when you talk about startups, around 56% of the startups never have seen year number 5 in their life. They die down before year number 5 arrives from them. My question is, and the same question goes, I believe it's Hasib Ahmed Noor Saab. He is asking the same question. And the question says about your idea, your take upon fail fast model. Fail fast says that red way of working against blue way of working. You don't have to be foolproof in terms of your preparation. You tend to spend years in your surveys and homeworks, and you miss the train of execution. This is blue way of working.
And the red way we're working says that you go into the market fast, you fail immediately, you come back into your drawing board, remake the things, and then again launch into the market. You fail fast. How do you take this model of working? I won't call it that it is about failing fast. I also agree that it is not only about the first mover advantage, but it is also the fast mover advantage. Okay, so the fast fail models do work, but if you have a mindset to fail to begin with, it's not a good mindset. Perhaps similarly, the fast success mindset is also not a great mindset because you'll miss out on many things. So essentially, you require both. Overdoing of anything is wrong, whether it's overdoing your research or foregoing quality and heading for quick execution, leaving problems in the workflow. So it's just like कि आपने जल्दी से एक MVP बना दिया लेकिन उसमें faults हैं, यूजर एक्सपीरियंस उसका बुरा है, ठीक है, just because you wanted to execute it fast, you just completely messed it up, you know. सो सिमिलरली ये भी गलत है कि आपने 10 साल रिसर्च में लगा दिए और उसके बाद आपने कुछ कर दिया. आइडियल मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ, बिकॉज लाइफ, यूनिवर्स, बिजनेस, everything is about creating the right balance. Okay, so balanced approach is important. दरमियाना रास्ता इख्तियार करना is important. सो आइडियली अगर आप किसी स्टार्टअप में जाना चाह रहे हैं तो कुछ वॉलंटियर्स को डाल के पहले एक कंज्यूमर रिसर्च करें जो कि आपकी 30-40 डेज के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए. मार्केट टेस्टिंग करें, चैनल पार्टनर्स के साथ 1-to-1 इंटरव्यूज करें, कस्टमर्स के साथ इंटरव्यू करें, अंडरस्टैंड करें हाउ मच आर दे विलिंग टू पे, वेदर दे रियली नीड इट और दे डोंट नीड इट. फिर आप अपना सर्वे करें, अपने काम को एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाएं, एक बेहतरीन पिच डेक बनाएं, उस पिच डेक को टेस्ट करें डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ, इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट को गेज करें, उनकी जो फीडबैक है मेंटर्स की और इन्वेस्टर्स की डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उसको इनकॉर्पोरेट करें, रीडू करें अपने ड्राइंग बोर्ड को, ठीक है, देन गो बैक, रीपिच, ओके, एंड अरेंज एन एंजल इन्वेस्टर और अ सीड कैपिटल अपना अरेंज करके फिर उसके एमवीपी पे काम करें. इंक्यूबेशन सेंटर में जाके तस्वीरें क्लिक करा के और फेसबुक के ऊपर 10 अमीर लोगों से तस्वीर क्लिक करके आप एग्जीक्यूशन भूल जाएंगे, आप एक यूट्यूब स्टार बन जाएंगे, ठीक है. सो दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. बी वेरी फोकस्ड. जो आपकी डील्स हैं उनको बिहाइंड क्लोज डोर्स करें, बिजनेस सीक्रेसी को, इंफॉर्मेशन सीक्रेसी को अपने सामने रखें, अपने कंपेटिटिव एज को क्लियरली डिफाइन करें और उसको एग्जीक्यूट करें. एग्जीक्यूट करने के बाद उसको बूटस्ट्रैप करने की कोशिश करें, भले उसके लिए यू हैव टू गिव योर फ्लैश एंड बोन इनटू इट. Once your project is bootstrapped with minimal seed capital and the proof of concept is there, go back to the investors and tell them we have proof of concept. Now we are looking to raise so much finance, और वो फाइनेंस क्लियरली आर्टिकुलेटेड हो कि आपने उसको किस जगह पे डालना है. ओके, मार्केटिंग में कितना जाना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितना जाना है, ओवरहेड्स में कितना जाना है, और आपका पूरा जीटीएम प्लान क्या है. और आपको अपनी नीड बतानी चाहिए. एक स्टार्टअप शुड टेल इट्स नीड्स, नॉट जस्ट अ नंबर ऑफ डॉलर्स. ओके, बिकॉज कई दफा जब इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं तो वो कहते हैं बेटा आपको प्रोग्रामर्स चाहिए तो मेरे अपना सॉफ्टवेयर हाउस है वो तो आपको वहां से मिल जाएंगे. ऑफिस स्पेस चाहिए भाई, मेरे ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाया करो हर रोज, नो प्रॉब्लम. तो बहुत सारी चीजें तो वो आपकी वैसे ही रिजॉल्व कर देंगे. सेल्स मार्केटिंग के चैनल्स चाहिए, मेरे जैसे इन्वेस्टर के पास आएंगे, मैं कहूँगा भाई मेरी एजेंसी है उसको छोड़ दो, तुम्हें उसके लिए पैसे नहीं चाहिए. मीडिया स्पेंडिंग के लिए चाहिए, वो हम डाल देते हैं, ठीक है. यूआई यूएक्स के लिए पैसे नहीं चाहिए, मेरी एग्जिस्टिंग टीम बैठी एग्जीक्यूट कर देगी. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए नहीं चाहिए, मेरा सीएफओ तुम्हारी कंपनी को भी देख लेगा, ऑलरेडी वो ग्रुप ऑफ कंपनीज को देख रहा है. तो बहुत सारी चीजें जब माइनस हो जाएंगी और हम आपको एक वैल्यू देंगे और अपने कनेक्शंस देंगे और अपने एक्सपीरियंस देंगे, अपनी एक्सपर्टीज देंगे, तो आपकी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और आप कहते हैं कि ठीक है जी मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए बल्कि मुझे 10 लाख चाहिए, बिकॉज 90 लाख की तो आप वैल्यू वैसी लेकर आ रहे हैं, राइट. तो स्टार्टअप्स गलती क्या करते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी हमें ये 90 लाख की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपया ही चाहिए, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन के ऊपर. सो दिस इज वेयर इट गोज. हाँ, अगर द स्टार्टअप इज नॉट वर्किंग एंड आपको इनिशियल स्टेजेस में पता लग जाए, जैसे आजकल के दौर में रेस्टोरेंट्स का बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, आप 3-4 महीने से ब्लीड कर रहे हैं इस पैंडेमिक में, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उसका रेंटल पे करते जाएं, द अर्लियर यू शट इट द बेटर इट इज, ठीक है. इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज आर नॉट डूइंग वेल, द अर्लियर यू शट इट द बेटर इट इज.
I understand it and you have explained it very well. आपने बता दिया कि आपकी वैल्यू को आपने डिफाइन करना है या वॉल्यूम को डिफाइन करना है, आपने शोकेस क्या करना है, अमाउंट को शोकेस करना है, ये जो वैल्यू यू वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर आपने उसको करना है. बिफोर आई गो इनटू अ डीपर स्टेप इनटू दिस इन्वेस्टमेंट थिंग, मैं आपसे ये चाहूंगा कि मेरे दो क्वेश्चंस के वन सेंटेंस ब्रीफ आंसर आपने देने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रेहान खालिक, who says that you have talked about the importance of mentors in terms of startups. You tell them that till date, how many number of mentoring for startups is there so that we can find the success rate of this. कि startups की कोई mentor करने वाले लोगों का कोई आपके पास नंबर या database नंबर है आपके पास? I don't have that research with me, but I can, generally gauge out that majority of the mentors are not the right mentors for the right startup. So mentor startup fit is wrong, just like a product market fit is wrong. ठीक है, अब आप अगर एक फिनटेक के अंदर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन आपका मेंटोर जो है वो एग्रीकल्चर से है, इट्स नॉट गोना वर्क. ठीक है, भी आप किसी सेनेटर को उठा के ले आते हैं और कहते हैं जी मैं फिनटेक बना रहा हूँ तो जरा मुझे हेल्प आउट कर दें बिकॉज आपके 10 प्रेसिडेंट जानने वाले हैं बैंक्स के. इट्स नॉट गोना वर्क आउट. वो आपको प्रेसिडेंट के आगे बिठा देगा लेकिन जो प्रेसिडेंट आपको फीडबैक देगा इट्स नॉट गोना वर्क. सो यू नीड टू हैव द राइट मेंटोर. नंबर 1. नंबर 2, mentor testing is whoever mentor that you bring on board needs to have a proven track record of being an entrepreneur himself or a successful businessman. This is very important. Okay. यहाँ पे आपको प्रोफेसर्स मेंटोर के नाम से नजर आते हैं जिन्होंने जिंदगी में सिवाय मोटिवेशनल लेक्चर्स देने के अलावा और कुछ नहीं किया. ओके, एंड दीज गाइस आर नॉट मेंटोर्स. मेंटोर्स किताबी लोग नहीं होते, मेंटोर्स एक्सपीरियंशियल लोग होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होता है और स्ट्रीट स्मार्ट और मार्केट स्मार्ट होते हैं. ओके, मेंटोर की एक्चुअल डेफिनेशन भी यही बताती है कि मेंटोर हैज गॉन थ्रू दोज रोड्स जहां पे आप जा रहे हैं. यू टेल अस समथिंग अबाउट एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. Well, minimum viable product again. This question comes from Munira Sheikh. वो सिर्फ हाईलाइट एक सुपरफिशियल डेफिनेशन दे दें एमवीपी की एंड वी विल प्रोसीड फर्दर. देखिए, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट ऐसी होती है कि लेट्स से आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप ट्रेनर्स, कोचेस को कॉर्पोरेशंस या प्रोफेशनल्स या सीकर्स के साथ कनेक्ट करना है. ओके, अब उसके अंदर आपने एल्गोरिदम डालने हैं, आपने उसकी ऑटोमेशन करनी है, ऑटो कनेक्टिविटी डालनी है, 1 2 3 करना है. आप वो ना करें. आप सबसे पहले तो उसका यूआई यूएक्स डिज़ाइन और उसकी स्लाइड्स बना दें कि भाई स्क्रीन बता दें कि भाई ये स्क्रीन्स होंगी. ठीक है, उस स्क्रीन्स के साथ उसकी जो बेसिक कनेक्टिविटी है वो डाल लें और 5-6 कोचेस और ट्रेनर्स को 5-6 लोगों के साथ उसकी ट्रांजैक्शन को टेस्ट आउट कर लें. ठीक है, दैट एसेंशियली बिकम्स योर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. Okay, so it is the minimum that you can Brandbeat create. advertising income communication. He is looking after the affairs of Stalliongates as chairman, and he is with us talking about the startups. शफात साहब, आपने जैसे बताया कि minimum viable product के ऊपर आप बात कर रहे थे. Let me take you to another data. Data ये कहता है सर कि it takes around 2.3 years for a startup where he is required to invest capital, but not only the capital, the gained profit also pooled into the business before it stands on its own. I would request you कि आप assume ये करें कि मैं एक नया startup हूँ. I'm giving you an example and position to give the answer. और मैं एक startup होने के बाद investment के लिए मेरे पास 3 option है. I can go to the banks, I can go for incubation centers, which you have shed your light on, and I can go to the angel investors. मैं इन 3 में से बैंक के पास जाता हूँ तो वो अपना हायर मार्कअप रेट में चार्ज करते हैं. मैं इंक्यूबेशन सेंटर्स पे जाता हूँ तो दे हैव स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहाँ पे मेरे जैसे बहुत नॉर्मल स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल आउट हो जाते हैं. एंड इफ आई गो टू द एंजल इन्वेस्टर्स, दे लुक इनटू देयर प्रेफरेंसेस एंड देयर इंटरेस्ट्स फर्स्ट. You tell me that being the startup in Pakistan, I want to go and proceed further into this highly growing up technology marketplace when it comes to startups in Pakistan. I want to join the train, but I am lacking the investments. What to do in this scenario? Incubation centers are of different types. Some of the incubation centers are very good, okay, and they have the right people screening. Now, if you're failing in the right incubation center, this means there is something terribly wrong with your business idea. Similarly, if you're going to a bank and also the bank is not ready to invest, maybe whether they love the idea or they hate the idea, this is what you need to assess.
whether they endorse the idea or not. Doing an investment is something else. Going to an angel investor, if you are not offering enough meat to the angel investor, and if it's not a fair deal, and if you're unable to negotiate with an angel investor, I think you lack negotiation skills. And if you lack negotiation skills, definitely you're not a great businessman. To be a good businessman, you need to learn how to negotiate. You need to create offers which has enough interest that you can receive from either any of the three investment parties that you've spoken about. Incubation centers, anyways, they do not invest anything. ठीक है. अच्छा, अब आप आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि what you should do. The thing is this, as a startup, as I've repeatedly said, if you have a good idea, you need to present it well, and you need to give out enough to the angel investors, and as well as any other co-founder that you're bringing in. हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग अक्सर हर दूसरे बंदे को अपने साथ को-फाउंडर बना लेते हैं. हम 1% 2% की इक्विटी के ऊपर लोगों से मुफ्त काम कराने की कोशिश करते हैं, गलत टीम को हायर कर लेते हैं. सो जो आपने मुझे 2.5 साल 3 साल की बात बताई है, देखिए वी आर इन द प्राइवेट इक्विटी स्पेस. जनरली 3 years पे बैक पीरियड जो है वो एक बहुत अच्छा पे बैक पीरियड समझा जाता है. ओके, 5 years पे बैक पीरियड इज समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल. 7 years पे बैक पीरियड के ऊपर जब हम वर्किंग करते हैं तो वो भी एक अच्छा पे बैक पीरियड होता है. थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर होती है, लेकिन अगर वो हैवी है और उसके अंदर हमें बिल्ट इन कैपिटल एप्रिसिएशन और क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, सो वी इन्वेस्ट इनटू सच बिजनेसेस आल्सो. ऑलराइट, अब 2.5 साल बाद अगर आप बूटस्ट्रैप हो रहे हो, ठीक है, लाइक 2.5 साल बाद आपका रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू होनी है मेरी इन्वेस्टमेंट आज लेने के बाद, और उसके बाद आपको 5 साल लगने हैं या 7 साल लगने हैं मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे रिटर्न करने में, ठीक है, या द ओनली वे टू रिटर्न माई इन्वेस्टमेंट इज कि आप दोबारा सीरीज ए सीरीज बी में जाएं और वहां पे मुझे डाइल्यूट करें प्रॉफिट के ऊपर, तो मेरी सारा कुछ जो है वो आपके बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आपकी सक्सेस ऑफ सीरीज बी या सीरीज ए के राउंड पे डिपेंडेंट है. ओके, which is too risky for me to invest. So I would not invest in a project जो मुझे ये कहे कि सर आज आप $1,00,000 डाल दें और जब मैं सीरीज ए करूंगा तो पहले आपको मैं एग्जिट दे दूंगा $2.5 लाख या $3 लाख के ऊपर. वो सीरीज ए ना हुई, प्रोजेक्ट ना बना, सीरीज ए की इन्वेस्टमेंट ना मिली, मेरे पैसे तो गए. So we are the people who invest in the concept, and not only the business concept, but we invest in people. We need the right entrepreneur working for us, which is essentially means that he should have the ability to make money work for us even better and smarter and harder compared to banks or other investment avenues that an investor has. Okay, be it passive investment or active investments. I mean, we are built for that, for doing that. Angel investors exist for the same intent. Here, I would ask you a quick question from Syed Hadayat Ali Shah, who says that would like Hashmi Saab to talk about bird in hand principle for new entrepreneurs. How to manage capital investment for any project? What are the do's and don'ts? Very simple. First of all, never fool yourself. Okay. अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपए का है, लेकिन आप 1 करोड़ रुपया रेस करते हैं और बीच में आपका प्रोजेक्ट ना 3 में होता है ना 13 में होता है और वो रह जाता है, फेल हो जाता है. जस्ट बिकॉज कि अगर एक प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको 10 करोड़ चाहिए तो आपको 10 करोड़ ही चाहिए, ठीक है. फिर आप ये ना करें कि आप 1 करोड़ रुपया रेस करने निकल जाए. सिमिलरली अगर आपको एक प्रोजेक्ट करने के लिए 10 लाख चाहिए तो फिर 1 करोड़ मांगने की जरूरत नहीं है. एक बात. दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेस कर लेते हैं और आपने उसको मैनेज करना होता है, तो यू ऑलवेज हैव अ गुड फाइनेंशियल एनालिस्ट वर्किंग विद यू. ओके, लेट हिम हेल्प यू मैनेज द फाइनेंसेस, लेट हिम ऑफर यू डिफरेंट एवेन्यूज. देखें, जब आप कोई कंपनी रन करते हैं तो उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं. कैपिटल इन्वेस्टर्स का एक लायबिलिटी होता है, आपका अपना कैपिटल भी एक लायबिलिटी होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपके पास बैंकिंग लाइंस आती हैं, सॉफ्ट फंड्स भी आ सकते हैं. अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कोई क्लाइमेट पे सोशल इम्पैक्ट है, एजुकेशन पे इम्पैक्ट है, पॉवर्टी एलिवेशन पे, हंगर उसके ऊपर इम्पैक्ट है, तो आप एनजीओ से इनिशियल फंड भी ले सकते हैं, यूएसएड से या बाकी जगहों से, व्हिच कैन हेल्प यू प्रोपेल थिंग्स. सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट. ओके, सो माय सजेशन टू द इन्वेस्टर्स इज कि कभी भी पैसे को मिसमैनेज ना करें. फॉर एग्जाम्पल, एक पिच हो रही है यूएस के अंदर जी,
ठीक है, आप कहते हैं कि जी मैंने अपना टिकट लूंगा, 2 लाख रुपए का टिकट आएगा, यूएसए जाऊंगा, होटल पे एक्सपेंडिचर करूंगा, मुझे बेहतरीन ब्रांडिंग चाहिए, रोल अप चाहिए, प्रिंटेड ब्रोशोर चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। आपने कुछ ना करते भी 5 से 7 लाख रुपया लगा दिया उस पिच के ऊपर। 7 लाख रुपए लगाने के बाद आप वो पिच देने गए हैं, और वहां से आपको किसी मेंटोर ने, मेरे जैसे ने कहा था कि बेटा अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका इज स्टिल नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। Okay, they are still shy. They themselves have a very good ecosystem unless you have a very good project. क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप 7 लाख रुपए लगा के अमेरिका जाएं, या आप वो 7 लाख रुपए इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज आपने वापस आके लोगों को कहना है, ओ आई वॉज एट सिलिकॉन वैली एंड लुक आई हैव अ पिक्चर विद दिस वीसी एंड आई हैव अ पिक्चर विद दिस वीसी, और मैं गूगल के ऑफिस में खड़ा हुआ था और उसके पीछे मैंने क्लिक ले लिए। अगर आप ये करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस फ्रैंकली स्पीकिंग आपने मेरी कैपिटल भी वेस्ट किया, अपना पैसा भी वेस्ट किया, बिकॉज इट वाज नेवर गोना वर्क। सो सिमिलरली even locally you should be looking at it. So you need to make very harsh decisions, okay, कि where to go, how to go, और मिनिमम पैसों में मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रेस कैसे करनी है, और मिनिमम पैसों के साथ मैंने मैक्सिमम यूजर बेस। आपका फोकस इन्वेस्टर की बजाय कस्टमर पे होना चाहिए। जब आपका फोकस कस्टमर पे होगा, इन्वेस्टर विल ऑटोमेटिकली फ्लॉक। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं समझता हूँ कि ये 3 पिलर्स इंडस्ट्री बिल्डिंग है, जहाँ पे एक पिलर आपका अपना इंटरेस्ट है, आपकी अपनी जो भी ऑप्शन है, दूसरा पिलर जो है वो इन्वेस्टर है, और तीसरा पिलर जो है वो कस्टमर है। तो ये कस्टमर को अगर हम ड्राइव करेंगे तो बाकी के 2 पिलर जो है खुद ब खुद जो है गेन लेना शुरू कर देंगे। शफात भाई, यू हैव टॉक्ड अबाउट स्टार्टअप्स इन डिटेल। टेल अस इन द लास्ट वेयर वी आर गोइंग टू कंक्लूड द प्रोग्राम, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. I was reading an article in International Finance Corporation has agreed to invest around $2.5 million in Pakistan in a project which is known as V5. Instead of Wi-Fi, they have titled it as V5. V5 means Women Entrepreneurs Finance Initiative. How do you take women entrepreneurs as a startup? Entrepreneurs are entrepreneurs. You know, to me, it doesn't matter whether it's a male or a female, it's a man or a woman. And I completely fail to understand why do we need to even segregate it. You know, entrepreneurship is entrepreneurship. Girls and women are having the same education as boys are having, at least in this era, in majority of the countries. Okay, okay, yes, okay. In Pakistan and other places, there might be issues, cultural issues, and there are somewhat issues, and I think NGOs are taking care of it. But generally speaking, you know, men and women are both being educated. They're getting the same education. They're receiving the same experiences. They're going to the same universities. Everybody's studying. Everybody has the same equal employment opportunity in most of the positions. Yes, in some companies, it is more to do with the companies, with their culture than anything else. And I cannot speak against or on behalf of any company, but I fail to understand why do we need to really segregate it, be it man or woman. You know, Pakistan had a woman prime minister before anybody else in majority of the world, okay, and in any Islamic world. So and today we see that a lot of women are very successful, including New Zealand and few others where they have really eradicated the pandemic very successfully, and they have done a great job. Some of the top best CEOs are women as well, you know, in multi-billion corporations. I have a lot of women working in our offices at senior positions all the way up to a director level position. Okay, we have dealt with a lot of women, and we deal with a lot of women businesses also as well as men businesses. So if you ask me, I don't really care whether it's a woman something or it's a man something. The bottom line is it's the ecosystem where men and women can work together. That's my say on it. Okay. Whenever I think of closing the program, a new question pops up from the lovers and people around you. And here comes another comment from Rehan Khalik, who says that most of the time, innocent startups, they had the idea, but these ideas are being stolen by the cruel and crude investors. And I've seen this thing happening with many of the new startups and small entrepreneurs, myself in the employment career, where the idea was unique, but it was taken away by either by the company professionals and then given to the bigger giants, or the bigger giants copying it and making it better than the original one. So in this case, what the startups should do, just a brief comment. If you start sharing everything that you dream every night on your bed, you know, well, it's going to go out and it's going to go viral. And you don't really share your dreams, okay? Ideas are not stolen, dreams are stolen. And un logon ki dreams are stolen
who are poor in execution, number one. Number two, you should always sign an NDA and make sure that it's properly registered with whatever courts under whatever jurisdiction before you open your mouth about your business idea. So if your business idea is stolen by either by the investor or by a professional, again, it is not their fault. It is your fault because you did not have the right protective legal protection or the right patents in place to make sure that your idea is protected. It doesn't take too long for you to get your ideas registered under intellectual rights, be it in Pakistan or be it abroad. Okay, even for you to register a firm outside, it costs you $500 and you can put up an idea. And there are international incubators which talks about intellectual rights locally and internationally. We are living in a global borderless world. So if someone comes to me and tells me, well, in Pakistan, we don't have this laws. Why? There are so many laws in international mulk and international countries. You can actually go there and then register yourself. Okay, you can have yourself patented in one jurisdiction or the other. So this is number one. Number two, अगर आपका आइडिया था और कोई बंदा उस आइडिया को खुद ही से एग्जीक्यूट कर गया है, okay, this means कि you gave out everything about your idea to someone without even bringing his money into your table. Why did you give him the secret recipe? If you gave him the secret recipe, it's your fault. He didn't steal it from you. You told him. Okay? So you got to be very careful when you do this. Let the investor put some money, ask the investor to give you some kind of a guarantee, and then open up your secret recipe. In a nutshell, आप अपना core business जरूर बताएं, detailed financial model जरूर share करें, सब कुछ share करें, लेकिन at the same time also protect your ideas and protect your rights. People and investors who are unethical and those who are unethical, they won't go far. Okay, if your idea is really unique, okay, and it has high barriers to entry, then this is your dream. You have more passion to execute it. वो अगर आज चोरी कर भी लेंगे तो 2 साल बाद शायद फेल हो जाए. Karma, I believe, always works. चोरी के ideas कई दफा काम कर सकते हैं, कई दफा नहीं करते. But yes, I've also seen a number of companies who are propelled because of somebody else's idea, and it's a corporate jungle out there. And for jungle, you need to have the survival of the fittest. Very well said. Munira Baji मेरे साथ interaction में कोई महीना पहले आई है, and great personality she is. She is saying, asking you and Shafaat bhai, may I ask you to put in sequence 10-point steps for startups to complete before pitching? For example, concept ideation, design thinking, drawing board, MVP, market research. She wants you to define the process briefly, point-wise, for the sake of convenience of the audience. Number one is your idea validation or conception of the business idea. उसके अंदर आपके एक पूरे टेस्ट होते हैं कि आपका product market fit क्या है, relevance to the market क्या है, so on and so forth. So number one is idea vetting. Your idea should be clearly vetted, which means that it should have a clear problem solution narrative to it, and it should have the right story which can resonate with the real problem of real people. Okay. Number two, I strongly recommend go into businesses which can give you, which is a mass problem. Okay, because apps or tech के अंदर especially, the higher the user base is better. Number three, उसकी monetization model clear होनी चाहिए. Monetization का मतलब यह है कि subscription model से दूर रहिए, user से पैसा ना लीजिए, बल्कि आप supplier से, channel partner से, advertiser से या data selling के ऊपर या data insights के ऊपर पैसे कमाएं, लेकिन आप यूजर के लिए उस प्रोडक्ट को अपनी को फ्री रखें, बिकॉज आपका जो मेन मकसद है वो यूजर बेस को इंक्रीज करना है और यूजर का जो टाइम है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा, नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके इसके साथ है स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी के अंदर यू हैव टू स्टार्ट विद अ लेजर फोकस ऑन अ सर्टेन सेगमेंट. जब आप उस लेजर फोकस पे काम करते हैं और वो आप एक सेगमेंट, एक कम्युनिटी क्रिएट कर लेते हैं और एक सक्सेस कम्युनिटी, एक सक्सेस यूजर बेस क्रिएट करने के बाद आप उसी सेगमेंट को रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन डिफरेंट जियोग्राफिकल communities or markets, and then it is both. You can have a product growth as well in your product vertical, service vertical, and you also have market growth and market verticals जिसमें you can step in and slowly gradually you have a growth strategy. So ये आपकी तीसरी चीज हो गई. चौथी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वैल्यूएशन का पता होना चाहिए. कभी भी किसी इन्वेस्टर बेवकूफ नहीं होता. ओके, अगर वी डू आवर बिजनेस, वी आर स्मार्ट पीपल. Okay, we are not stupid people. We meet people all the day. So don't come to us trying to fool us with crazy valuations. आपकी वैल्यूएशन बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. इस पे मैंने आपसे पहले बात कर ली कि आपकी नीड्स अपनी आइडेंटिफाई करें और देखें कि वो इन्वेस्टर आपके पास क्या वैल्यू लेके आ रहा है. इज इट ओनली मॉनेटरी वैल्यू और नॉट.
एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि आपका माइंडसेट और आपके इन्वेस्टर का माइंडसेट या एंजल इन्वेस्टर का माइंडसेट या को फाउंडर या पार्टनर्स का माइंडसेट क्या है. योर पर्सनैलिटीज एंड योर माइंडसेट मस्ट ऑल्सो मैच. अदरवाइज अक्सर चीजें जो है वो माइंडसेट के डिफरेंसेस की वजह से खराब हो जाती हैं. सो वैल्यूएशन को फाइंड आउट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज बी रीजनेबल व्हेन यू पुट द वैल्यूज टुगेदर. आप ये देखिए कि आपके पास आज हाथ में क्या है. व्हाट हैव यू रियली डेवलप्ड, व्हाट हैव यू रियली डिजाइंड एज ऑफ टुडे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि वर्क ऑन योर ब्रांड मार्केटिंग एंड पोजिशनिंग. आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग ब्रांडिंग शुड बी प्रोफेशनली डन. इट बिकॉज मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक वाहिद फंक्शन है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी सेल्स और रेवेन्यूज को. अगर आप P&L स्टेटमेंट देखें तो उसके ऊपर सेल्स होता है, उसके नीचे सारे एक्सपेंसेस होते हैं. सो योर ब्रांड मार्केटिंग एंड पोजिशनिंग इज द की टू योर सक्सेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर आपको UI UX भी आ जाता है, प्रमोशंस भी आ जाती हैं, एडवर्टाइजिंग भी आ जाती है, PR भी आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग भी आती है. ऑल दीज थिंग्स कम इनटू इट. अच्छा, उसके बाद आपका GTM का जो प्लान है वो बड़ा क्लियर और डिस्टिंक्ट होना चाहिए. आप अपना मार्केट फनल क्रिएट करें, देखें कि आपकी फनल क्या है, आपका टारगेट सेगमेंट क्या है, और उस टारगेट सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको रीच आउट कैसे करना है. सो आपका गो टू मार्केट प्लान शुड बी वेरी क्लियर. गो टू मार्केट प्लान के अंदर 3-4 स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें आपकी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या आएगी, कस्टमर रिटेंशन की स्ट्रैटेजी क्या है, कस्टमर सपोर्ट की स्ट्रैटेजी क्या है, CSR की स्ट्रैटेजी क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, ठीक है, उनके FAQs को आंसर करने की स्ट्रैटेजी क्या है, नेगेटिव क्राइसिस PR को मैनेज करने की क्या स्ट्रैटेजी है, इवेंट्स और एग्जीबिशंस आपने कौन से अटेंड करने हैं, किन पे जाना है, किन पे नहीं जाना, किन किन मेंटर्स को अपने साथ रखना है, एडवाइजरी बोर्ड आपने कैसा बनाना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह से उसके बाद आपका जो नंबर 6 है या 7 आई डोंट नो, आई एम लूजिंग काउंट, बट नंबर 7 है कि आपके पास एक क्लियर कट एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए. जो टीम आप अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं किसी इन्वेस्टर को या किसी को भी, वो टीम शुड बी वेरी केयरफुली क्यूरेटेड. इट डजेंट मैटर कि आप कह रहे हैं जी मेरी टीम के ऊपर एक गूगल में काम करता हुआ लड़का या लड़की जो है वो जी मेरी CTO है. इट डजंट ब्लडी मैटर कि वो गूगल में काम किया, फेसबुक में किया. जो CTO आप हायर कर रहे हो, क्या उसको अपने काम का पता है कि नहीं पता? इज ही अ डूअर और इज ही अ पोजीशन होल्डर? दिस इज इंपॉर्टेंट. क्या उसका गूगल से होना जरूरी नहीं है, उसका आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एग्जीक्यूशन करना और आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना जरूरी है, आपकी JD को फुलफिल करना जरूरी है. ओके, तो जो सबसे छठी सातवीं इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग एंड एक्वायरिंग द राइट रिसोर्सेज फॉर द राइट जॉब. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 9 जो है वो ये है कि वो आपकी है PR और पर्सनल नेटवर्किंग. जब आप कोई भी दुनिया में बिजनेस करते हैं तो आपको पर्सनल नेटवर्क अपना ग्रो करना होता है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल पोजिशनिंग और नेटवर्क ग्रोथ होनी चाहिए. यू शुड बी very connected with the right people on LinkedIn, with the right business communities, with the right chambers, with the right business clubs. जैसे हम लोग कैपिटल क्लब में मेंबर्स हैं और 2-3 बड़े क्लब्स के अंदर मेंबर्स हैं जहाँ पे टॉप नॉच बिजनेस कम्युनिटी बैठती है. You should have connections with these people. This is very important. Connections always work. लास्ट चीज जो आपने मुझसे पूछी थी नंबर 10 ये है कि अपनी नीयत को साफ रखें और आपका जो ईमान है अपने रब पे, अपने खुदा पे, जो भी आपका रिलीजन जिसको आप फॉलो करते हैं, उस फेथ को फॉलो करें. आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, कितनी भी आपकी तस्वीरें खिंच जाएं, कितने भी डॉलर्स आप कमा लें, अल्टीमेटली आपने 7 फुट नीचे 7 फुट की कब्र में घुसना है. उस चीज को याद रखें और स्टे हम्बल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Remain human, don't become a bot. Okay, and as far as you remain human and you keep giving back to the society and you keep sharing your journey, your knowledge, you keep empathizing with people around you, and you are still respectful to your parents, you are not shy कि मेरे माँ बाप जो हैं वो देहात में रहते हैं और मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा हो गया हूँ तो मैं अपने माँ बाप को अपनी लॉन्च सेरेमनी पे नहीं ला सकता. यू नो व्हाट, शेम ऑन यू. ओके, आपने माँ बाप को लाएं, उनको उनके ड्यू रिस्पेक्ट दें. ठीक है, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व रखें अपने बिजनेस में, अपने बच्चों से अपना विजन शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, जो पुराने दोस्त हैं उनसे दोस्ती को कायम रखें और उस चीज़ को ग्रो करें और गरीबों में बैठना सीखें, कम्युनिटी में बैठना सीखें. अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ उठते बैठते नहीं हैं, आपको अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगी और वही होगा कि 2.5 साल या 5 साल के बाद आप उस 56% में शामिल हो जाएंगे जो कि फेल हो चुके हैं.
So these are the 10 key points which I wanted to share out of my experience. Sorry, I wasn't even prepared for it, but this is out of my own learnings. Shafad, I was all set and I was to refrain myself not to go beyond 30 minutes today while we talk. But again, courtesy all the audience and love of them for you, we are here probably with the last comment from your side. I was reading an article which says that what are the emerging sectors to invest as a startup. I want your validation and comments upon the sectors which are known as to be the emerging sectors in the coming days. One is agricultural technology, robotics, artificial intelligence, new food and blockchain, digital media, education plus technology, and the gaming platforms. You say few of the words about the emerging sectors for Pakistani startups to invest in. Emerging sectors are different for different economies. Not every single emerging sector can go global and become, because in business, the most important thing is the timing. Okay, Zameen.com, for example, came into a timing when there was a clear gap and that was the right time. They sustained, it's a 14 years journey, it's not a 2 years journey. Daraz, OLX, these guys also came at the right time in the right market, and that's where they emerged. Whereas Amazon, which was a bookseller to begin with, turned around its business and then spent the last couple of decades in just getting the business out. So the point is this: okay, every different economy has different emerging sectors depending on their own financial, economic, social, cultural fabric. Okay, and obviously the digital penetration. Pakistan, may we have 57 million smartphone users, and still we need a lot more to actually make it a lucrative market when it comes to internet penetration and mobile penetration into the masses. Having said that, certain sectors are definitely very attractive. I would rate healthcare to be on top, education to be on top, which is edtech and health tech, and I will also put fintech to be out there. इन तीन पोर्टल्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी अ पोर्टल लाइक विच इज़ रिलेटेड टू जॉब क्रिएशन और freelancing. And freelancing is extremely important because that is something which Pakistan can excel. And Pakistan does have things. अगर हमारे स्किल डेवलपमेंट ठीक हो और लोग सही ग्राफिक डिजाइनिंग, सही वेब डेवलपमेंट, सही एआई देखे तो इट्स गुड. अब जहाँ पे बड़ा नॉर्मली फैंसी वर्ड्स यूज होते हैं, पहले तो डिसरप्ट का होता था, अब वो डिसरप्ट से हटके तो अब रोबोटिक्स और एआई और इनके ऊपर बात होनी शुरू हो गई है, और ब्लॉकचेन पे. तो मुझे भाई आप ये बता दो कि आपकी पूरी ऑडियंस में एंड ऑल दीज पीपल अराउंड, जरा उनसे कहें कि जिन लोगों को एआई के बारे में अलिफ बे भी पता है वो अपना हाथ खड़ा कर दें, और जिन्होंने ब्लॉकचेन पाकिस्तान में बैठ के सीखी है वो भी हाथ खड़ा कर दें, और जिनको रोबोटिक्स में कभी उन्होंने दो चीज़ों के साथ एक छोटी सी गाड़ी भी 4 पहियों वाली अगर मूव करवा ली है ना, और या उन्होंने 3D प्रिंटिंग के ऊपर काम किया हुआ है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. यूटी का ग्रेजुएट जो आज भी ग्रेजुएट है उसको अलिफ बे भी नहीं पता, वो आज भी 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ रहा है. ठीक है, सेम गोज विद द नंबर ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज. अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट does not change their syllabus, does not bring people up to mark, and does not really have the right penetration into the right subjects and giving the right skills with the right certifications to the right people, this economy is still far flung from what it could be. So yes, there are good sectors, and in this, amidst this skillful gap, yes, if there is someone who wants to come up and start a business and tap into this, so I think skill development is a great sector which requires investment also, and you can make a lot of money out of it. So these are the few sectors which I think you should look into. Real estate, I can say, is not doing right now very well, but still there is demand. But because of the pandemic's uncertainty, I think real estate might not be the right place to go right now. लेकिन क्योंकि pre-existing demand है low cost housing की, तो yes, after certain time when it's a little uncertain, लोगों की jobs पक्की होंगी तो वो mortgage industry वगैरह शायद build हो जाए. जिस मुल्क के अंदर आपके स्टार्टअप्स को सॉफ्ट लोन्स नहीं मिलते, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, और दूसरी पार्टी मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसका मजाक उड़ाते हैं. तो द पॉइंट इज दिस कि यार हम लोगों को मजाक उड़ाने से बाहर आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हमें ये पॉलिटिकल जो गेम्स हैं इनसे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि येस, लैपटॉप शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मोबाइल फोन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. The ministry and education and all these IT boards, they should give out a budget कि जो सब अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे इंटरनेट को फ्री किया जाए ताकि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़े, स्मार्टफोन्स के ऊपर ड्यूटी ख़त्म की जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन्स को यूज़ करें, और हर शख्स जो है वो उस सारे डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके जो कि इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है, अपने आप को ग्रूम कर सके, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज ले सके और इस इकोनॉमी को बिल्ड कर सके.
That's my literally my take on what the sectors are. Shafat, I'm a strong believer that knowledge is not possessed by anyone. Any knowledge, any kind of knowledge which you have today is being acquired from any source around you. It can be books, movies, or the mentors themselves. You tell us before you leave the platform that what is the list of recommended books for the new startups, or any motivational movies to get inspiration, or do you have any mentors which you can make, whom you can refer the new startups to contact, or any other list? Last minute advice from your side to the audience. Yeah, honestly speaking, I read a lot of books, okay, and I've read a lot of books, but there's a way to read a book. I read books with a very critical thinking, okay. I never follow a book or any book except for Quran Kareem and the Sahih Sata of Ahadith, जिनको मैं critically नहीं देखता, लेकिन उनको मैं obviously उन पे I ponder upon them, or I deduce whatever I need to deduce when I read Quran Kareem. But apart from that, every single book I read it with a very critical eye, and I find out what are the flaws and what is it that this author is missing and how it can be improved. And I try to take the gist out of it, कि उनका message क्या है. And furthermore, the authors of the books, it completely depends whether it's an author who is just sitting on a lakeside and writing a fictional book, or it's an author who has really done something with a proven, research, or a proven, entrepreneur. So frankly speaking, yes, I can't really recommend a book. Except for this, I would really recommend कि आप लोग कुरान करीम जो है वो और अस्वाए हसना, ये दो चीज़ें जो हैं इनको ज़रूर करें. मेरे मेंटोर जो हैं जिनकी आपने बात पूछी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ना तो मेरा कोई आइडियल है और ना ही मेरे ख्याल में कोई हो सकते हैं. उन्होंने जिस तरह से हमें मार्केटिंग के बारे में बताया, एक हक बात को सॉफ्ट तरीके से बयान किया, डिफरेंट लीडर्स को दुनिया के उन्होंने किस तरह से मिले, उन्होंने लोगों को किस तरह से लेके आए, मुआखात कैसे कायम की, एक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का कैसे कायम किया, एक पॉलिटिकल, एक बिजनेस स्ट्रक्चर कैसे कायम किया, सादिक और अमीन होके एज अ ट्रस्टेड बिजनेसमैन अपने आप को प्रोपेल कैसे किया, एक ऑर्फन होके इज्जत कैसे बनाई, और अनडिस्प्यूटेड रिस्पेक्ट जो उनको अता हुई. तो आई थिंक उनसे बढ़कर मेरे लिए कोई आइडियल नहीं है, और मोर ओवर जो उन पे ब्लेसिंग्स थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, ऑल दोस थिंग्स. सो उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अब हाल में, आई ऑलवेज रिकमेंड कि हर शख्स के पास एक मुर्शिद का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका मेंटोर हो. आप उसको मुर्शिद का नाम दे दें, पीर का नाम दे दें, मेंटोर का नाम दे दें, टीचर का नाम दे दें, गाइड का नाम दे दें, हादी का नाम दे दें, योर कॉल. बट आई रिकमेंड कि आपको एक इमाम की, एक मुर्शिद की हमेशा ज़रूरत होती है, जो आपको स्पिरिचुअली भी गाइड करे और आपको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और सोशली और आप बिहेवियरली आपको गाइड करे. क्योंकि एक बात याद रखें कि जो कुछ आपको मेरे बाहर नज़र आ रहा है वो मेरे अंदर की रिफ्लेक्शन है. ठीक है, अगर मेरा अंदर ठीक नहीं है तो मेरा बाहर भी ठीक नहीं होगा. अगर मैं बाहर कवर लगा भी लूँगा तो थोड़े से बाद वो मट्टी झड़ जाएगी, और जो अहले नज़र होगा वो 2 मिनट में पहचान जाएगा कि बंदा सच्चा है, झूठा है, फ्रॉडी है, वाकई सक्सेसफुल है या सिर्फ बातें करना जानता है. सो देयरफॉर ये सारी चीज़ें आई वुड सजेस्ट कि जो बंदा स्ट्रॉन्ग रूटेड होता है, और एक बात याद रखे, the biggest power on earth is the power of prayer. So if you have somebody, a murshid who is praying for you, a mother, a father, a brother, a sister, a wife, a child, a cousin, and a grandparents who are praying for you, अगर आप पीछे दुआएं हैं किसी गरीब की, किसी मुफलिस की, किसी यतीम की, किसी साइल की, अल्लाह ताला विल मेक श्योर दैट यू ग्रो. और आपको वो दुआएं उसी वक्त मिल सकती हैं, इसलिए नहीं कि भाईजान मेरे लिए दुआ करो, बल्कि इसलिए कि जब आप उनकी कोई खिदमत करते हैं वो आपके लिए दुआ करते हैं. सो आपके पास कुछ हो या ना हो, आई थिंक एक अच्छा बोल ज़रूर होता है. और ये वही बात है कि ग़ज़वा तबूक के ऊपर जब कुछ नहीं था तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जो खजूरें थी वो वही ले आए. उन्होंने पूछा भी अपने घर पे क्या छोड़ के आए? सब कुछ छोड़ा है. उन्होंने कहा जी सब कुछ ले आया हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया. तो अगर मेरे पास कोई शख्स आके ये कहे कि जी मेरे पास कुछ देने को नहीं, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, आई थिंक इंसान के पास हर वक्त कुछ ना कुछ देने के लिए ज़रूर होता है, और वो दें, अपने फेथ को करें, फेथ रखें, और किसी ऐसे मुर्शिद को ज़रूर तलाश करें जो आपको हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की और फिजिकल जर्नी, ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है. इसको करें ताकि आप अपनी उस आखिरी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं जहां पे आपको नफ्सुल मुतमइन्ना नसीब हो जाए, थ्रू बिजनेस, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू गिविंग, थ्रू ह्यूमैनिटी, एंड थ्रू लव एंड पीस. Thank you very much, Shafaat. Thank you very much for your time and wisdom sharing. We had shared that 450 million startups have already been existing in this universe. You are the next one.
You are the next one, provided if you follow all the steps which had been shared by Shafar today. And the best of the best book to read is Quran and Sahasitaus by Hasna. With this, what would be the most valuable views and comments to close the program? Just believe in the power of prayers and look after for the prayers around the people around you. With this, I would again thank Shafat for his wisdom sharing in time, and I hope that he is going to share such wisdom on all the other platforms as well. I'm saying bye bye from my side on the platform, and I'm leaving my guest today with the audience to say the goodbye words by himself. Shafat bhai, over to you, and Allah Hafiz from my side. Thank you very much, Shazad. I think we had a good session. You came very well prepared. And the best part is that it was a very informative show. Even I learned a lot of things. Thank you, all the audience, for being there for and questioning me. I'm always around. You can follow me at Shafaat Hashmi on Facebook or even on LinkedIn. And I usually respond to almost everyone. And आपके कोई भी आपको मुझसे advice चाहिए हो कुछ भी चाहिए हो, I'm always there to help out. Very approachable and very comfortable to approach to also. So if there's anything I can do for any one of you, feel free to ask me. May Allah bless you all and may Allah protect you from the pandemic that we have around us. Stay safe, stay protected. Allah aapki hifazat farma hum sabki. Allah Hafiz. Thank you.